we are discussing the contents of chapter 6. In chapter 6, we are studying superposition, that is overlapping of sound waves. We studied yesterday superposition of two sound waves with same frequency moving in same direction along the same line but having slight different amplitudes as one of the special cases of overlapping of sound waves. Sound waves overlapping, superposing may have different amplitudes, may have different frequencies, from different directions. Out of all these permutations, combinations, we discussed yesterday the overlapping of two sound waves of same frequencies moving in same direction along the same line. When such sound waves superimpose, we get the phenomenon of interference. When interference occurs, we get redistribution of uniform energy in the medium without any loss of energy. At some points, you get maximum intensity, maximum amplitude. At some points of the medium, we get minimum amplitude or minimum intensity. So the energy gets only redistributed with its conservation. Only the condition to observe effect interference, the two sound waves should be of same frequencies. वन मोर एग्जाम्पल, पियानो है, हम लोगों को मालूम है पियानो. इफ आई हैव टू पियानोस, फ्रॉम बोथ द पियानोस इफ आई प्रेस द सेम कीज, जो कि फर्स्ट पियानो पे है वही की मैं सेकंड पियानो के बजाने वाली हूँ. बोथ आई विल प्रेस साइमल्टेनियसली. सो पियानो वन चालू किया तो एक साउंड नोट आती है, दूसरा चालू है सेपरेटली, दूसरी साउंड नोट आएंगी. दोनों का नेचर सेम रहेगा, दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम कीज साथ में बजाएंगे तो यू विल हियर अ लाउड साउंड. Means you get constructive interference where amplitude is maximum. So while discussing the phenomenon interference, we also derived expression for amplitude of resultant wave as well as the expression for intensity of the resultant wave. दोनों waves तो है ही, उनके सुपरपोजिशन के हिसाब से you get one more third wave which is called the resultant wave. So at what positions resultant wave will have maximum amplitude, resultant wave will have minimum amplitude. ऐसे भी हम लोगों ने एक्सप्रेशंस कल डिराइव किए हैं. So general expression for amplitude of resultant wave is A is equal to square root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. यह हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है. Similarly, intensity at any point of resultant wave being proportional to a square will be proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. Since phi at different points has different value, intensity as well as amplitude will change from point to point. ये होता ही है. We consider spatial cases. We considered, for example, if this is one sound wave, first particle, second particle, third particle, fourth particle, and so on. This is sound wave. Suppose compression rarefaction के अलावा मैंने crest curve दिखाए हैं. The second sound wave is made simultaneous. Suppose they are in phase, means crest should coincide with crest. Minimum value should coincide with minimum value.
trough should coincide with the trough. Then these waves are in phase. So when they overlap of this particle A, this wave will produce displacement A1 and second wave will produce its displacement A2. So due to first wave, it has already shifted from position A to position A1. Due to second wave, now it will be shifted from A1 to A2. So net resultant amplitude of A when the phases are same will be A1 plus A2. So in phase waves रहते हैं तो at that point of the medium the amplitude will be maximum. So yesterday we also derived expression for maximum value and minimum value of the amplitude of resultant wave इन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होती थी वो आप लोगों को याद है ना एक जनरल एक्सप्रेशन क्या है ए स्क्वायर a2 square 2a1 a2 cos theta. So if waves are in phase phi will be 0 उसका कुछ फेज ही नहीं है फेज डिफरेंस है ही नहीं तो a max कितना हो जाएगा and this is only possible when phase of both are same. So cos phi 0 यानी कि 1 हो जाएगा and a max will be then a1 plus a2. When there is phase difference between the two waves interfering is exactly 180. फेज डिफरेंस है यानी कि phi की वैल्यू नॉन जीरो है so means what phi can have any value phi may be 90 degree 91 degree 100 degree 120 degree 180 degree 279 degree 360 तक कम से भी वैल्यू उसकी हो सकती है यानी कि the waves are said out of phase if their phase difference is exactly pi radians, that is 180 degree. They are said in opposite phase. Out of phase तो रहते ही है. For example, if I have the waves, ये line of propagation है. मैंने एक wave चालू की इधर से. And this is one sound source at time t is equal to 0 that sound source is made on. I will be with one more sound but I will make it on a little after the first source. तो ये जब भी चालू होगा ना तो ये वेव ने कुछ तो ड्राइव किया है ऐसे होगा So these two waves are still out of phase. ये phase में नहीं है क्योंकि crest of first wave is not coincide with the crest of second wave because both sources are not sounded together. So sometimes what happens if you delay the time of second source so that both waves will be out of phase यानी कि उसकी हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद मैंने इधर दूसरा साउंड सोर्स ऑन किया ये पहली बार तो है ही दूसरा साउंड सोर्स मैंने यहाँ रखा है there is distance between the two sound sources are not at the same position तो ये भी आउट ऑफ फेज ही हो गए ये भी आउट ऑफ फेज ही है क्रेस्ट के ऊपर नहीं है ट्रफ के ऊपर नहीं है so at all these cases they are said to be out of phase so phase angle क्या होगा exactly out of phase यानी कि उसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के हिसाब से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा if amplitudes are unequal एक वेव उसको ऊपर पुश करेगी दूसरी वेव ऊपर से नीचे पुश करेगी if amplitudes are equal the resultant will be 0 जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा so again it will be at means position but
इसीलिए एम्पलीट्यूड्स उनकी सेम चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो व्हेन दे आर एग्जैक्ट अपोजिट इन फेज, वेयर फेज डिफरेंस इज एग्जैक्ट पाई रेडियंस, दे आर कॉल्ड अपोजिट फेज। आउट ऑफ फेज की स्पेशल केस अपोजिट फेज है। आउट ऑफ फेज बाय एनी एंगल, फाई की वैल्यू 1 डिग्री रहती हो सकती है, 2 रेडियंस हो सकती है, 3 रेडियंस कितनी भी हो सकती है। जब ये होता है तभी उनको बोलते हैं अपोजिट इन फेज। सो इफ आउट ऑफ फेज बाय पाई रेडियंस दे आर इन अपोजिट फेज। तो पाई रेडियन रहेगा तो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, amplitude will be zero if their amplitudes are same, otherwise amplitude minimum होगा, total zero नहीं होगा। So value of a minimum will be when they are opposite in phase, that is out of phase by 180 degrees. That time amplitude of resultant wave will be minimum, and that value we found as A1 minus A2. So based on this, few theory questions as well as numerics are also asked. So we will first consider the numeric based on, and then we'll proceed further for few more theory questions. मैं एक न्यूमरिक आपको बताती हूँ। Two sound waves have amplitudes 3 millimeter and 4 millimeter. एक की एम्पलीट्यूड 3 मिलीमीटर है, दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड 4 मिलीमीटर है, ऐसे उन लोगों ने बोला है। दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, बोथ साइमल्टेनियसली मूव हो रहे हैं इन सेम डायरेक्शन। फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट्स वेयर फेज डिफरेंस इज। साइमल्टेनियसली एक ही जगह, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि दे आर इन फेज। हम लोगों को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सो द ऑब्जेक्ट्स गिवन्स आर व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम is 5/2, third case is 5, fourth case is 3/2 and fifth case is 2 pi। तो ये जब फेज डिफरेंसेस है तो वो पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या रहेगी। सो व्हेन फेज डिफरेंस इज 0, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, दैट इज A1 plus A2। तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 7 mm, 3 plus 4 and 5/2 means 90 डिग्री। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज क्या है, cos of phi, जो जनरल एक्सप्रेशन है ना, A1 A2 cos phi, ये जो थर्ड टर्म है cos 90 will be 0, so the third term will vanish। So what will be the amplitude of resultant wave at points where these waves meet out of phase by 90 degree, that is pi/2 radian। तो कितना आएगा, स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगी। तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, that will be 5 mm। जब ये एग्जैक्ट पाई है, so cos pi is -1, so amplitude will be minimum, so that will be A1 difference A2, जो बड़ा एम्पलीट्यूड है उसमें से छोटा एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है, so that will be 1 mm and 3 pi/2, that is 270, again cos of 270 same as cos 90, that is 0। So fourth term से third term will vanish and you will get again same square root A1 square plus A2 square। तो इधर भी कितनी आएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव 5 mm आएगी, और 360 यानी कि अगेन इन फेज हो गए, एक साइकिल पूरा कर किया उन लोगों ने। तो here you will get maximum, that is A1 plus A2, that is 7 am। So when phase difference between the waves change, amplitude differ from each other।
सो सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली। अभी इसमें क्या है, सपोज बोथ वेव्स आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल होते तो मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 mm नहीं आती, कितनी हो जाती, 0 mm आ जाती है। ये वैल्यू 8 mm आ जाती, क्योंकि डायरेक्टली डबल हो जाएगा। सो इफ बोथ आर identical, minimum value of amplitude will definitely be zero, otherwise it will always be non-zero। तो ये अलग अलग एम्पलीट्यूड्स मिलते हैं। अकॉर्डिंगली यू, इफ यू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली बोलते हैं, तो ये जीरो है, ये पाई है, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड दिस 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल हम लोग दे रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 90 में मिनिमम, अगेन मैक्सिमम, अगेन मिनिमम। सो दिस विल बी the graphical presentation of resultant wave in this case। So this is a sample question। Few more questions can also be asked। Theory questions भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं। State the expression for amplitude of resultant wave produced due to superposition of two sound waves having same frequencies but different amplitudes। Expression for amplitude, that is general expression, square root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi, where a1 is a2 is phi is, ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। दिस कैन बी आस्क फॉर 1 मार्क। VSA टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन, what are maximum and minimum values of intensities of resultant wave due to interfering waves having same frequencies but different amplitudes? डिराइव करने के लिए नहीं बोला है, डायरेक्टली यू हैव टू स्टेट द फॉर्मूला। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, देखो, the intensity will be maximum when amplitude is maximum, and I max then will be proportional to a max square। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a max bracket square, so a max is a1 plus a2 bracket square। What will be minimum value of intensity? Minimum value of intensity will be proportional to a minimum square, so that will be then a1 minus a2। हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है पहले से, ब्रैकेट स्क्वायर। So these are maximum and minimum values of intensities in interference pattern। और एक क्वेश्चन आता है, state values of intensities when waves are in phase। in phase यानी कि क्या, intensity will be maximum। So in other words, instead of asking you write the expression for maximum value of intensity of resultant wave, they may ask you what is value of intensity of resultant wave if waves are in phase। the same question, answer same है, लेकिन wording थोड़ा अलग है। what is minimum value of intensity of resultant wave due to interference of two sound waves, equal frequencies, slight different amplitudes, if they occur at the given point out of phase by pi radians। खाली out of phase word नहीं चाहिए, आउट ऑफ फेज कितने रेडियंस से है, अगर पाई रेडियंस से है तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर फॉर एनी वैल्यू ऑफ पाई अदर देन पाई, you have to use the general expression। this is expression only if they are exact opposite in phase। out of phase by pi radians is called opposite in phase। डायरेक्टली वो वर्ड यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। If you know value of I max, I minimum, you can find their ratios। ratios भी निकाल सकते हैं। So we will solve few more numerics। I am moving fast।
मैं न्यूमरिक्स ले रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिए। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज 9:1, I max to I minimum is 9/1, ऐसा दिया हुआ है due to superposition of waves of same frequencies. Calculate ratio of their amplitudes. जो waves है ना, उसका एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है. So by knowing I max to I minimum, you have to find A1 by A2. ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे को बताओ. What you know? I max is A1 plus A2 bracket square. I minimum is A1 minus A2 bracket square. उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 9/1. You take square root on both sides. So square square जाएगा. ये 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. कॉम्पोनेंट को डिविडेंड करो, यानी कि A1 plus A2 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर upon numerator minus denominator. तो कितना आएगा? 3 plus 1 4 and 3 minus 1 will be 2. This A2 minus A2 cancel. We'll get 2A1. Similarly, minus minus will become plus. So minus plus A2 plus A2 will become 2 and minus A1 plus A1 will be 0. So it will be 2A2. So this 2 will get cancelled. And 4 by 2 will be 2 by 1. So you have value A1 as to A2 as 2 as to 1. So if you know ratio of maximum and minimum values of intensities of resultant wave, you can find ratio of amplitudes of individual waves. तो यानी कि इसकी सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड अगर 2 mm है, तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड उसके डबल है, होनी चाहिए, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. ऐसे फ्यू न्यूमरिक्स भी आ सकते हैं. वन मोर न्यूमरिक I will read. Ratio of intensities के रेशियो दिए हैं of two waves is 1:25. So they have given I1 upon I2 as 1/25. Intensities of individual wave का रेशियो दिया हुआ है and they have asked you to find ratio of I max to I min. जब ये वर्डिंग यूज करते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम, ये वर्डिंग जब भी हम लोग यूज करते हैं तभी दे आर रिलेटेड विथ दे आर रिलेटेड विथ रिजल्टेंट वेव. और जब भी खाली इंटेंसिटीज के रेशो दिए हुए हैं, ऐसा हम लोग जब भी बोलते हैं ना, इंडिविजुअल वेव्स होते हैं. So I1 by I2 is given. You have to find value of I max to I minimum. क्या करेंगे? I1 is proportional to A1 square. I2 is proportional to A2 square. So I1 by I2 will be same as A1 square by A2 square will be same as 1/25. So A1 as to A2 will be 1:5. एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हो आप लोग. By knowing values of ratio of intensity, you can find ratio of amplitudes. अभी क्या करते हैं? A1 plus A2 किया तो A max मिलेगा. 1 plus 6, 5 will be 6 and A1 minus A2 किया. डिफरेंस सब्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, हम लोगों को खाली डिफरेंस चाहिए, मोड ऑफ द सब्ट्रैक्शन. So for I, so A max is known to you, A minimum you can find, and they want I max to I minimum. So I max to I minimum will be A max square upon A minimum square. अभी ये A max यानी कि this is amplitude of resultant wave. This is intensity of resultant wave. 6 6 are 36, 4 4 are 16 will be 9/4. So expected answer is 9/4. So ratio of values
is 9/4. I say न्यूमरिक्स बहुत बार से किए जाते हैं. We will have few more still. Waves of frequencies n and 4n travel through the same medium. What can you say about their velocities? जो दो waves है ना उसकी frequencies अलग अलग है. So do they travel with same velocity in the given medium or they will differ in velocities? बताओ बच्चों लोगों. Give me the answer of the question. Two waves different frequencies एक ही मीडियम में जा रहे हैं तो वेलोसिटीज उनकी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी. साउंड वेव्स है. साउंड वेव्स विल ट्रैवल थ्रू गिवन मीडियम. सपोज फॉर एयर ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी आप लोग लेते हैं ना वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लेते हैं 320 मीटर्स पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. Sound in air यानी कि irrespective of their values of frequency, each and every wave will travel with the same speed in air. उसकी frequency 320 हो जाए नहीं तो 480 हो जाए. फ्रीक्वेंसी से कुछ मतलब नहीं है जब तक वो साउंड वेव सेम मीडियम में प्रोपगेट हो रहे हैं. दोनों तीन साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे विल ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी. Few more questions. Two harmonic waves amplitudes A1 A2 ऐसे भी questions पूछे जाते हैं. What is meant by interference of sound waves? What are the conditions required to observe it? State the conditions for constructive and destructive interferences. ऐसे भी questions हमेशा पूछे जाते हैं. So I will post one exercise assignment and you have to solve that assignment in the notebook. So